Hello guys, welcome to our channel. So we are studying today chemistry chapter number 2, structure of atom. I will make the explanation line by line so that it will be not difficult for you. So here are some objectives. Let's study the objectives. After studying this unit, you will be able to know about the discovery of electron, proton and neutron and their characteristics, describe Thomson, Rutherford and Bohr atomic models, understand the important features of the quantum mechanical model of the atom, understand nature of the electromagnetic radiation and Planck's quantum theory, explain the photoelectric effect and describe features of atomic spectra, state the de Broglie relation and Heisenberg uncertainty principle, define an atomic orbital in terms of the atom quantum numbers, state of Bohr principle, Pauli's exclusion principle and Horn's rule of maximum multiplicity, and write all the electronic configurations of the atoms. So these are the objectives. Means this is a very good and lengthy chapter. The first part of the chapter is of many stories given there. You better read it yourself to master that. So I will start that the first atomic theory was proposed by the John Dalton. Here I have highlighted that. As well as moving to the down, I can get the discovery of the subatomic particles. An insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases. Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of the charged particles. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. ये तो हमको लोगों को पता ही है कि माइनस माइनस में रिपेल करेगा, प्लस प्लस में रिपेल करेगा और माइनस प्लस में अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्ट करेगा. ये हमको पता ही है. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का कैसे आविष्कार हुआ है वो हम सारा पढ़ लेंगे. तो इलेक्ट्रॉन 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrodes. मतलब माइकल फराडे सर जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास किए हैं एक सोल्यूशन से ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स. मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड है अपना कैथोड और एनोड, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रहा है which resulted in the liberation and deposition of matters at the electrodes. अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है तो कुछ तो मैटर डिपोजिशन भी होगा कैथोड या एनोड के ऊपर. हम लोग ये सर्टेन लॉज क्लास 12 में पढ़ेंगे. दिस रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये रिजल्ट सजेस्ट करता है कि जो नेचर पार्टिकल नेचर है वो सजेस्ट करता है. In 1850s, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes, which is known as cathode ray discharge tube or CRT tubes. This is known as cathode ray discharge tube. It is depicted in 2.1 here. It is the picture, the CRT tube or the cathode ray tubes. A cathode ray tube is made of a glass containing two thin pieces of metals contain electrodes celled in it. तो मतलब ये एक पूरा ग्लास का बना हुआ है और यहाँ पे एक कैथोड है और यहाँ पे एक एनोड है, दोनों पार्ट है और पूरा ग्लास का बना हुआ है. The electrical discharge through the glasses could be observed only at very low pressure and a very high voltage. मतलब प्रेशर क्या करेंगे हम, प्रेशर को हम लो रखेंगे और वोल्टेज जो है वो अपन हाई रख देंगे. तो प्रेशर लो एंड वेरी हाई वोल्टेज. द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय द evacuation of the gas tubes. When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through the stream of particles moving in the tube from the negative electrode. So जब भी हम हाई वोल्टेज ऑन कर दिए इलेक्ट्रोड्स को पास करने के लिए, इलेक्ट्रोड से पास करने के लिए वोल्टेज, तभी करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. करंट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स से फ्लोइंग करना स्टार्ट कर दिया. कहाँ से कहाँ, ये याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा. कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कैथोड टू एनोड. ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है और ये कंफ्यूजिंग भी है. सो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड टू एनोड.
दिस वर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। इसको बोलते हैं कि कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in an anode and coating the tube behind anode with phosphorant material zinc sulfide. So यहाँ पे जो phosphorant currents जो होता है ना, phosphorant material जो होता है कि जिंक सल्फाइड यूज किया गया हो वहाँ पे। When these rays, after passing through anode, strike the zinc sulfide coating, a bright spot is delivered. मतलब जब the rays passing through the anode से जब पास कर गया, strike the zinc sulfide जो कि है यहाँ पे phosphorant जैसे कि काम कर रहा है, तो एक bright spot मिल रहा है on the coating पे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, कैनोड है, कैथोड है, यहाँ पे हाई वोल्टेज लगा हुआ है। ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब और CRT ट्यूब बता सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स समराइज्ड बिलो। अगर कुछ हुआ, मतलब अगर कुछ प्रैक्टिकल्स हो गया तो रिजल्ट्स तो मिलेंगे ना। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 to 6 रिजल्ट्स आई गेस। सो result number one are the properties of cathodes. I can say that cathode rays, these are all the properties of cathode rays. The cathode rays start from cathode and move towards the anode. Of course, they are originated from cathode and they're moving towards the anode. These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials, fluorescent or phosphorescent. Both are same, fluorescent and phosphorescent, which glow when hit by them. Television tubes are cathode ray tubes and television pictures result due to the fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorant materials. ये जो सभी जो रिजल्ट्स मिले हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स, ये सभी है कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन में आ सकता है। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके, नंबर थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा तो ये जो रे है स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। In the presence of electrical or magnetic field, the behavior of the cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. The characteristic of cathode rays do not depend, जो characteristic होता है cathode rays का वो depend नहीं करता है the materials of electrodes and the nature of the gas tubes. ये बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो कैथोड रेज है ना, जो कैथोड रेज है वो डज नॉट डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई भी मटेरियल हो और कैसा भी गैस प्रेजेंट हो, चाहे हाइड्रोजन डाला हुआ हो, ऑक्सीजन डाला हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Thus we can conclude that electrons are the basic constituent of all the atoms. तो यहाँ से हम इसको मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एटॉम्स के अंदर, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। In 1997, the British science physicist J.J. Thomson measured the ratio of the electric charge to mass of electron by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as the path of electrons. When only electric field is applied, the electrons deviate from the path and hit the cathode ray tube at a point A. तो यहाँ पे जनरली बताया गया है कि जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने मेजर्ड किया है, क्या किया है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब E/m का एक रेशियो बनाया है और उनको मेजर किया है बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री से अप्लाई किया गया है। Similarly, when only magnetic field is applied, electron strikes the cathode ray tube at point C, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि फिगर 2.2 में
दिया गया है। तो फिगर 2.2 जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये स्क्रीन है क्या, ZnS का जिंक सल्फाइड का स्क्रीन दिया हुआ है। यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। मैग्नेट का दो पोल रहता ही है, नॉर्थ पोल रहता है, साउथ पोल रहता है। यहाँ पे हाई वोल्टेज का एक बैटरी दिया गया है। By carefully balancing the electrical and the magnetic field strength, it is possible to bring back the electron in the path which is followed in the absence of electric or magnetic field, and they hit the screen at point B. Thomson argued that the amount of deviation of the particles from that path in the presence of electrical magnetic field depends on. थॉमसन ने मतलब ये दावा किया है कि the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field, मतलब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड अगर रह जाए तो डेविएशन कैसे हो सकता है, मतलब कैसे डिपेंड करेंगे, तो डिपेंड करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट है बोल रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल बढ़ेगा, उतना इंटरेक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना डिफ्लेक्शन, मतलब अगर वो नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रेट जाता, वो स्ट्रेट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मास का भी कोई इंपॉर्टेंस होता है कि जो लाइटर पार्टिकल है ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, अगर लाइटर है तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, फिगर 2.2, ये पिक्चर आप प्रैक्टिस कर लिएगा, ये इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of magnetic field। मतलब यहाँ पे बताया गया है जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और द मैग्नेटिक फील्ड है जो कैसे इंक्रीज करेगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज। अगर हम डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज हो जाए तो वोल्टेज इंक्रीज होगा अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सीधा सीधी बात बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा। By carrying out accurate measurements on the amount of deflections observed by the electrons on the electric field strength or the magnetic field strength, Thomson was able to calculate the E by me as this. This is the charge to mass ratio of an electron, where me it is the mass of the electron in kg, it is given in kg, always remember the units, and E is the magnitude of the charge on the electron in the coulomb. It is given as C, as we know that the charge is SI unit of charge is coulomb. Since electrons are negatively charged, the charge on the electron is minus E. Okay, now next, charge on the electron. R.A. Millikan devised a method known as oil drop experiment. उन्होंने क्या किया, एक oil drop experiment किया to determine the charge of the electrons. He found the charge on the electron to be, मतलब उन्होंने क्या दिया, -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. The present accepted value of the electrical charge is 1.602176 in 10 to the power -19 coulomb. The mass of the electron was determined by combining this results with the Thomson's value, और यहाँ पे हम मास निकाल सकते हैं क्योंकि जो रेशियो दिया है, रेशियो थॉमसन सर ने बता दिए हैं, और जो मास है वो हम निकाल लेंगे 9.1094 इंटू 10 to the power -34 kgs। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन का मास 9.1094 into 10 to the power -31 kgs. Both are essential for doing the numerical type questions and you have to remember both.
Next, moving, discovery of protons and neutrons. How the protons and neutrons are discovered. We have learned the discovery of electrons. We have learned how the charge and the mass are determined. Now let's study about discovery of protons and neutrons. Electrical discharge carried out in the modified cathode ray led to the discovery of the canal rays. So what are the canal rays? These are the modified cathode ray tube. These are the modified cathode ray tube carrying positively charged particles. The characteristic of this particle, positively charged particles, are listed below. Means these are all the canal rays characteristics, or you can say the properties, canal rays characteristics. Unlike cathode rays, mass of positively charged particles depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions. ये बोल रहे हैं कि unlike the cathode rays, mass of the positively charged particles जो depend करता है कि nature of the gas पे, these are simply the positively charged gaseous ions. The charge to the mass ratio of the particles depends on the gas from which this originate. The charge to mass ratio कहाँ पे depend करता है? जहाँ से gas originate हुआ है. Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit on the electrical charge. The behavior of these particles in the magnetic or the electrical field is opposite to that observed for electron or cathode rays. जो यहाँ पे behavioral pattern दिखा रहा है electrical field और magnetic field, ये completely opposite है. यहाँ पे बताया गया the smallest and the lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. So these are the smallest and the lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. This positively charged particle was characterized in 1919. Later a need was felt for the presence of electrically neutral particle as an constituent of atom. This particle was discovered by Chadwick, which is popular name. Its full name is James Chadwick, 1932, by bombarding an thin sheet of beryllium by alpha particles when electrically neutral particles have a mass slightly greater than that of the protons were emitted. He named these particles as neutrons. So who named the particles as neutrons? James Chadwick. The important properties of all the fundamental properties particles are given in table 2.1, and today is this much.